Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Dream to English. In this particular video, I am going to talk about an interesting language technique called one word substitution. It is simple yet powerful way to make your writing and speaking more concise and effective. So make sure do watch this video till the end. And one more thing, I have an amazing gift for you. This is an ebook. By the help of this ebook, you can enhance pronunciation and vocabulary by following 8 tips which I have mentioned in this ebook. So don't forget to grab this ebook using given link in description box. My name is Dr. Ratan Patel and I am an English grammar trainer. I help in improving English grammar. In simple terms, one word substitution means replacing a long sentence or a long phrase with a single word that conveys the same meaning. What are the benefits of using one word substitution in our speaking, in our writing or in communication? Well, it can help you to avoid repetition and make your writing, speaking and communication more engaging. And it can also help you to expand your vocabulary and can help you to learn new words with new meaning. So let's learn 15 one word substitution in this video. So here is first one and this is साइंस ऑफ मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल आर्ट्स, यांत्रिक और औद्योगिक कला का विज्ञान जिसे हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट इज साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग, स्वस्थ रहने का विज्ञान जिसे हम बोलते हैं हाइजीन. नेक्स्ट वन इज साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस, शिलालेखों का विज्ञान जिसे हम बोलते हैं एपिग्राफी, पुरालेख शास्त्र. नेक्स्ट वन इज साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, मानव सौंदर्य का विज्ञान जिसको हम बोलते हैं कलालॉजी, सौंदर्य विज्ञान. नेक्स्ट वन इज साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स, तिथि निर्धारण का विज्ञान. इसके लिए हम बोलेंगे क्रोनोलॉजी, कालक्रम. नेक्स्ट वन इज साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, अपराधों और अपराधियों का विज्ञान जिसे हम बोलते हैं क्रिमिनोलॉजी, अपराध विज्ञान. नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ क्वाइंस, सिक्कों का अध्ययन जिसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, मुद्रा शास्त्र. नेक्स्ट वन इज साइंस ऑफ क्लाइमेट, जलवायु का विज्ञान जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान. नेक्स्ट वन इज साइंस ऑफ ब्लड, रक्त का विज्ञान जिसे हम बोलेंगे हिमेटोलॉजी, रुधिर विज्ञान. नेक्स्ट वन इज साइंस ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का विज्ञान जिसको हम बोलेंगे ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान. नेक्स्ट इज साइंस डील्स विद द प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स, विज्ञान शब्दों के उचित उपयोग से संबंधित है उसे हम बोलेंगे टर्मिनोलॉजी. नेक्स्ट वन इज द साइंस डीलिंग विद द हेरिडिटी, अनुवांशिकता से निपटने वाला विज्ञान जिसे हम बोलेंगे जेनेटिक्स, अनुवांशिक विज्ञान. नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेटल्स, धातुओं का विज्ञान और प्रौद्योगिकी जिसे हम बोलेंगे मेटलर्जी, धातु कर्म. नेक्स्ट वन इज साइंस एंड फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन लॉ, मानव कानून का विज्ञान और दर्शन जिसे हम बोलेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस, न्यायशास्त्र. नेक्स्ट वन इज साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग गुड फूड, अच्छा खाना बनाने और बनाने का विज्ञान और कला जिसे हम बोलेंगे गैस्ट्रोनॉमी, पाक कला. थैंक यू फॉर वॉचिंग. I hope you found this video helpful and informative. If you have any doubt or question in your mind, put your doubt or question in comment section. And don't forget to like, share and subscribe this YouTube channel for more upcoming valuable videos. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.